are 4 methods of solving simultaneous equations: line with curve, elimination method, substitution method, graphical method, and matrix method. I also mentioned that in the scope of the syllabus, you are only supposed to know elimination and substitution. Clear है यहाँ तक? सब heading डालें. Steps to solve simultaneous equations using elimination method. Steps to solve simultaneous equations using elimination method. Step number 1. Those online, if you have started writing, writing in the chat box. Step number 1, multiply both the equations. Multiply both the equations by a constant such that the coefficient of one of the variables in both the equations becomes same. Multiply both the equations by a constant such that one of the variables in both the equations, such that the coefficient of one of the variables in both the equations becomes same. Step number 2. Add or subtract the two equations obtained in step 1. Add or subtract the two equations obtained in step 1. Step 3. Automatically, one of the variable will be eliminated. Automatically, one of the variable will be eliminated and the value of the other variable will be found. And the value of the other variable will be found. Step number 4. Substitute the value of the variable found. Substitute the value of the variable found in one of the original equations. Substitute the value of the variable found in one of the original equations and hence find the value of the other variable. And hence find the value of the other variable. लिख लिया? मैं फिर बात बता दूं जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, लिखना चाहें तो लिख लें. Elimination method is only applicable
to line with line situation. Elimination method is only applicable to a line with line situation. Elimination method is only applicable to a line with line situation. यानी जब दोनों इक्वेशंस लीनियर होंगी तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं. अगर एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है या दोनों क्वाड्रेटिक हैं तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई नहीं होगा. Am I clear? So let's say the equation given is let's say this is the equation that you wish to solve simultaneously. I want all of you to put your pens down. Focus on the screen. Hello. सबसे पहले ये फैसला करें which variable do you wish to eliminate. It's your choice. You can either eliminate x or you can eliminate y. It is your call. You need to make a decision. So I will do this same question twice. First, I will eliminate x. Next, I will eliminate y. और फर्स्ट आई विल एलिमिनेट y, देन आई विल एलिमिनेट x. बट मैं सवाल दो दफा करूंगा ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो. सो लेट्स से पहला मेरे दिल चाह रहा है y को एलिमिनेट करने का. सो स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन. साथ साथ नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे. आई विल गिव यू एम्पल टाइम टू कॉपी. स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय अ कांस्टेंट सच दैट वन ऑफ द वेरिएबल इन बोथ द इक्वेशंस बिकम सेम. अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम पहली इक्वेशन को दूसरे y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी इक्वेशन को पहले y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय अ कांस्टेंट सच दैट one of the variables in both the equations become same. To do so, we will multiply y का सेकंड वाला कोएफिशिएंट पहले वाली इक्वेशन में, पहले वाला कोएफिशिएंट दूसरी वाली इक्वेशन. फेयर इनफ. इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 10x माइनस 15y इज 15 और ये हो जाएगा 9x प्लस 15y इज 42. मोहम्मद खान काइंडली ऑब्जर्व करें, आपको खुद समझ में आ जाएगा. अब क्या हुआ, स्टेप नंबर 2, add or subtract the two equations. How will I decide whether to add or to subtract? If the coefficients that have become same have opposite signs, like in this case, if the coefficients that have become same have opposite signs, we will add the two equations. 15y दोनों में सेम हो गया है, opposite signs हैं, we will add the two equations. X is 57 upon 19. 19 3 is 57. So x is 3. Automatically one variable will be eliminated and the value of the other variable will be found. Substitute the value of the variable found in one of the original equations. Substitute x is equal to 3 in, let's say, equation 1. Are you all with me? So 2x minus 3y is 3. 2x की जगह 3 minus 3y is 3. 6 minus 3y is 3. Minus 3y is 3 minus 6. Minus 3y is minus 3. Y is 1. Am I clear? 3 comma 1.
डू यू ऑल अग्री? क्या सबको एलिमिनेशन मेथड समझ में आया? इसको कॉपी करें, फिर मैं यही सवाल दोबारा करूंगा, एंड जब मैं दोबारा करूंगा तो मैं एलिमिनेट करूंगा एक्स को। 2x minus 3y is equal to 3. 3x plus 5y is equal to 14. Now I wish to eliminate x. Once again, stop writing, concentrate. I will give you time to copy. ये 3 है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6x minus 9y is 9. 6x plus 10y is 28. Now the two equations that have become same has the same sign. So when the two equations जिसका coefficient same होता है have same signs, then we subtract the two equations. When we subtract the two equations, सबकी sign बदल जाती है. When we subtract the two equations, sign of each and every component changes. 6x minus 6x minus 19y, 9 minus 28 is minus 19. Y is minus 19 upon minus 19, y is 1. Am I clear? Am I clear? Sorry, किसकी साइन चेंज करी, ऊपर की कि नीचे की? ऊपर की कि नीचे की? साइन नीचे की चेंज करिए बेटा। आई सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन ऊपर वाली माइनस हो रही है नीचे वाली से, साइन नीचे वाली की चेंज हुई है। आर यू ऑल विद मी? नाउ सब्स्टिट्यूट y is 1 किसी भी एक इक्वेशन में, चलो 2 में डालता हूं। 3x plus 5y is 14. 3x plus 5 into 1 is 14. 3x is 14 minus 5. 3x is 9. X is 3. थ्री कॉमा वन। तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, इवेंचुअली वही आंसर पे पहुंचोगे। एम आई क्लियर एवरीवन? काइंडली कॉपी फर्स्ट। Steps to solve simultaneous equations using substitution method. Steps to solve simultaneous equations using substitution method. Step number 1. Make the third equation. Make the third equation from the easier of the two equations. Make the third equation from the easier of the two equations. लिख लिया? Step number 2. If the third equation is made from the first equation, if the third equation is made from the first equation, substitute it .
in the second equation. But if the third equation, but if the third equation is made from the second equation, substitute it in the first equation. Step number 3. Automatically a variable will cancel off. Automatically a variable will cancel off and the value of the other variable will be found. Automatically a variable will cancel off and the value of the other variable will be found. Am I clear? Step number 4. Substitute the value of the variable found. Substitute the value of the variable found in the third equation. Substitute the value of the variable found in the third equation and hence find the value of the other variable. And hence find the value of the other variable. Clear? Step number 1, make the third equation from the easier of the two equations. Step number 2, if the third equation is made from the first equation, substitute it in the second equation. If the third equation is made from the second equation, substitute it in the first equation. Step number 3, automatically a variable will cancel off and the value of the other variable will be found. Step 4, substitute the value of the variable found in equation 3 and hence find the value of the other variable. Am I clear? What do I mean by make the third equation from the easier of the two equations? क्या मतलब हुआ, दोनों में से easy कौन सी है भाई? पहला जवाब है कि if one equation is linear and one is quadratic, then the easier of the two equation is linear. अगर एक इक्वेशन लीनियर है, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो easier of the two equations हमेशा लीनियर वाली होगी. अगर दोनों लीनियर हैं, तो जिस लीनियर इक्वेशन में कोएफिशिएंट नहीं है किसी वेरिएबल के साथ, तो वो easier of the two है. Are you all with me? तो मेजॉरिटी लोगों ने कोई एक पार्ट ऑफ द जवाब दिया, यानी कि अगर लेट्स से 3x plus y is 7 and 2x plus 3y is also 7. Now please realize that in the first equation y के साथ कोएफिशिएंट नहीं है और दोनों इक्वेशंस लीनियर हैं. मुझे कैसे पता दोनों लीनियर हैं? पावर मैक्सिमम पावर 1 है, कल डिस्कस किया था हमने. तो इसका मतलब ये हुआ आई विल मेक द थर्ड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन. y is 7 minus 3x is the third equation. Step number 2, if the third equation is made from the first equation, साथ साथ नहीं करेंगे, समझेंगे. If the third equation is made from the first equation, I will substitute it in the second equation. Substitute equation 3 into 2.
because I have derived the third equation from the first equation. 2x plus 3, 7 minus 3x is 7. 2x plus 21 minus 9x is 7. 2x minus 9x, 7 minus 21, minus 7x is minus 14, x is 2. Do you all agree? Substitute x is equal to 2 in equation 3. Y is 7 minus 3x. Y is 7 minus 3 into 2. Y is 7 minus 6, that is 1. So the answer is 2, 1. Am I clear everyone? मैंने क्या किया, मैंने रियलाइज किया कि इक्वेशन 1 इजी है. क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट नहीं है और दोनों इक्वेशंस लीनियर हैं. So I made the third equation from the first equation. Since I made the third equation from the first equation, I will substitute equation 3 into 2. After that, I got the value of x as 2. Now substitute the value of x in equation 3 and I got the value of y. So 2, 1 is the answer. Am I clear? कॉपी करें और एग्जांपल्स कराता हूं तो आपको और बात क्लियर होगी. अगर ऐसी इक्वेशन होती जो पहले थी 2x minus 3y is equal to 3, 3x plus 5y is equal to 14. Please realize that although both the equations are linear, none of them is without coefficient, which indicates that both these equations are equally difficult and equally easy. दोनों linear हैं, लेकिन दोनों में coefficients बगैर की कोई वेरिएबल नहीं है. अग्री? तो हम क्या करेंगे, हम किसी से भी थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं. इन दिस सिचुएशन हम किसी से भी थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं. फ्रॉम 1, 2x is 3 plus 3y, x is 3 plus 3y upon 2. Substitute equation 3 into 2. 3, x की जगह 3 plus 3y upon 2 plus 5y is 14. 9 plus 9y upon 2 plus 5y is 14. We cannot cross multiply until we find the LCM. 9 plus 9y upon 2 plus 10y upon 2, या पूरे के नीचे एक ही 2 लगा दो, is 14. 9 plus 19y is 28. 19y is 28 minus 9. 19y is 19. Y is 1. Substitute y is equal to 1 in equation 3. Three comma 1 is the answer. Let's say the equation is x square plus y square is 5. 3x plus y is 1.
Please realize that the first equation is quadratic and the second is linear. So I will make the third equation from y is 1 minus 3x is the third equation. Substitute equation 3 into 1. Since I have made the third equation from the second equation, I will substitute it in the first equation. X square plus y square is 5. X square 1 minus 3x square is 5. X square plus 1 minus 6x plus 9x square is 5. Am I clear? Am I clear? Am I clear? 5x square minus 3x minus 2 is 0. Since all of you have cleared your O-level math, I hope everyone knows how to factorize and use quadratic formula. कोई ऐसा शख्स जिसको फैक्टराइजेशन करने नहीं आती हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने ना आता हो? कोई ऐसा जिसको फैक्टराइजेशन करने ना आती हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना लगाने आता हो, तो उसके पास ये हक नहीं है कि उसने ओ लेवल मैथ क्लियर किया हो। अच्छा हुआ किसी ने हाथ में उठाया। 5x स्क्वायर minus 5x plus 2x minus 2 is 0. 5x x minus 1 plus 2 x minus 1 is 0. 5x plus 2 x minus 1 is 0. X is minus 2 upon 5, x is equals to 1. Are you all with me? Once I found the values of x, substitute values of x in equation 3. Y is 1 minus 3x. Y is 1 minus 3 minus 2 upon 5. Y is 1 minus 3 into 1. प्लीज बताएंगे? 11 upon 5. So the final answer is minus 2 upon 5 comma 11 upon 5, 1 comma minus 2. Since a linear equation, a quadratic equation hai, there are two solutions as discussed yesterday. Am I clear, everyone? Do you all agree? Yes or no? Kindly copy. अगला सवाल, करिए खुद से। वंस अगेन एक लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, सोच समझ के फैसला करिएगा। Y is 4x minus 5 upon 3. X square. Since I have made the third equation from the second equation, I will substitute it in the. थोड़ा रिस्पॉन्स तो दो यार। y की जगह पे 4x minus 5 upon 3 is 10. 3 का इंतकाल कर देते हैं। x square plus 4x square minus 5x minus 10 is 0. 5x square minus 5x minus 10 is 0. 5 x square minus x minus 2 is 0. X square minus 2x plus x minus 2 is 0. X minus 2 plus 1
x minus 2 is 0, x is minus 1, x is 2. Are you all with me? Now substitute x in equation 3. Y is 4x minus 5 upon 3. बेटे जो बातें कर रहे हैं ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. -1, -3, 2, 1. Are you all with me? Are you all done? कितनों ने सही किया था? बाकियों को अपनी गलती मिल गई है? Have others found their mistake? किससे बनाऊंगा? From to. Why? Because it is linear. 2t is 1 minus 3s. T is 1 minus 3s upon 2 is the third equation. Since I have made the third equation from the second equation, I will substitute equation 3 into 1. I need your attention. 3s square plus 2, 1 minus 3s upon 2 square is 11. Please सब लोग की attention चाहिए मुझे. 3s square plus 2, 1 minus 3s, the whole thing square को कैसे खोलूंगा? a square minus 2ab plus b square याद है? और 2 के स्क्वायर को कैसे खोलूंगा? Are you all with me? 1 minus 3s, the whole thing square is a square minus 2ab plus b square upon 2 का square is 4. Are you all with me? ग्रीन टी शर्ट वाले आदमी बातें हो जाएं तो थोड़ी पढ़ाई भी कर लेना. Can I cancel this? Now I will find the LCM. Are you all with me? 9s square plus 6x square is 15s square. Minus 6s plus 1 is 22. 15s square minus 6x plus 1 minus 22 is 0. क्यों प्लस एस भाई? मोहम्मद खान काहे को प्लस एस प्लस 6s माइनस 6s ही है. Are you all with me? 5s square minus 2s minus 7 is 0. 5s square plus 5s minus 7s minus 7 is 0. 5s कॉमन निकाला s plus 1 minus 7 कॉमन निकाला s plus 1 is 0. 5s minus 7 s plus 1 is 0. S is 7 upon 5. S is minus 1. Do you all agree? Am I clear? S को substitute कर दो t में. T is 1 minus 3s upon 2. T is 1 minus 3, 7 upon 5 upon 2. T is 1 minus 3 minus 1 upon 2. T is 4 upon 2. T is 2. T is 1 minus 21 upon 5 upon 2. T is minus 16 upon 2 upon 5 upon 2 minus 8 upon 5. So the answer is 7 upon 5 comma minus 8 upon 5 and minus 1 comma 2. Do you all agree? समझ में आया किस तरह लीनियर को क्वाड्रेटिक में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है? समझ में आया क्यों मैंने लाइन विद कर्व सिचुएशंस पढ़ाई थी? Are you all following me? Do you all agree?